हाँ जी नहीं चल रहा है हम देखते हैं डोबी अले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सिपाही बन गए। उनके वीरता भरे कारनामों में से दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में ब्रिटिशर दत्त के साथ मुंबई के बम फेंकना प्रमुख है। वो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी नारे लगाते हुए उनको गिरफ्तार करा दिया। वो असली बम भी फेंक सकते थे, और उन्होंने साबित किया कि वो कातिल नहीं थे और वो सही थे कि इस धमाके की गूंज लंदन तक सुनाई पड़ी। इनकलाब जिंदाबाद के नाम से लाहौर जेल गूंज उठी और पूरा देश, खासतौर पर नौजवान, उनके साथ आ खड़े को गोली मारकर इस जनसंहार का बदला ले। Response for his actions on 30th of April 1919 at Jaliawala in Amritsar, the committee has reached its conclusion. It declares Regiment General. किस चीज के लिए है?
किसी पछतावे के उस भयावह जगह से निकल गए। British. Though the blackest chapters in the history of British rule became an inspiration of nationalism, instead of being crushed through these brutalities, further strengthened, and Punjab reacted with more strength. The revolutionaries, the Naujawan Bharat Sabha, and many other nationalists fought bravely for achieving freedom. The Indian tricolour unfurled in Delhi on 15th August 1947. It is because of those sacrifices that today we enjoy the freedom with our heads held high, without an ounce of fear. Let us offer our homage with respect, dignity and sanctity. Standing on the soil of Jaliawala bagh, a bagh that will always enthuse nationalism for future generations. Conspiracy case was still fresh, besides the relative impact of the war. On the other hand, we had in Punjab Michael O'Brien, the Lieutenant Governor, who was hell-bent on crushing any nationalist feelings. It was 9th April 1919. Punjab was celebrating the festival of Ram Navami. These celebrations too were looked upon by the British as conspiratorial meetings. Leaders like Ram Dutt, Gopal Chand, Narandas, Duni Chand and others were promoting Hindu security to oppose the British. Amidst this, O'Brien ordered the arrest of the Jaliawala. जलियांवाला में निश्चय पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु अचेत अवस्था में इस महिला को एक भारतीय ने ही सुरक्षा प्रदान की। डरे हुए अंग्रेजों ने अपने परिवारों को गोविंदगढ़ के लिए भेज दिया। हिंसा कुछ कम हो